This is the Gurudwara Bangla Sahib temple in New Delhi, India. Open 24 hours a day, 365 days a year, the temple's kitchen, or langar, feeds 35,000 to 40,000 people every day, for free. And on religious holidays, that number can swell to well over 100,000 people. At the heart of this entire operation is kitchen manager Gobind Singh, who makes sure there is always enough to eat. कभी भी कोई आए, कोई रात के 2 बजे आए, ऐसा दिन कोई नहीं रहा कि कोई बंगला साहिब से भूखा गया हो. To keep up with demand, the kitchen uses specialized machines that can do everything from chopping vegetables and stirring stews to steaming the perfect dal. We visited the temple during a special holiday called Gurpurab to see how it makes a festive meal in such big batches. The day begins with making a type of sweet rice pudding called kheer, which is a special menu addition for Gurpurab. At the helm of the operation, is head chef Balbir Singh, who's been overseeing this process for years. 700 किलो की खीर बननी है जो पूरे दिन चलेगी. Large bags of white rice are poured into metal bowls and washed by hand. 25 kilograms of the washed rice is then scooped into a massive pot of water and mixed by a mechanical arm. एक कढ़ाई में हमारी 250 किलो दूध की खीर बन रही है इस टाइम, जो कि कम से कम जो क्वांटिटी है उसकी 300-400 किलो हो जाती है. Once the pot has been filled with milk and it starts to boil, they pour in a large bag of wheat flour. जो कंप्लीट 1 घंटे में तैयार हो जाती है हमारी चीज़. अदरवाइज वैसे अगर हम तैयार करते हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हमारी चली हैं हमें बहुत सुविधा हो गई है. ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम में हो जाता है. During the pandemic, the kitchen found itself needing to make more food with less stuff. The solution was to introduce pots that could automatically stir and cook most dishes in half the time. तो ऐसा सिस्टम सेटअप किया है. अब 1 घंटे में हम 1 लाख आदमियों को लंगर भी प्रोवाइड करा सकते हैं. तो कोरोना काल में जैसे लंगर की ज़रूरत पड़ी, एक दिन में हमने 3.5 लाख लोगों को लंगर उनके घर तक पहुंचाया था. While the kitchen has embraced technology for cooking, many of the vegetables the kitchen uses are still processed by hand. One of the most popular dishes the community kitchen makes is aloo matar, a curry dish made with potatoes, peas, and a creamy tomato sauce. Making this dish begins with heating vegetable oil in a pot as a base for the tadka. जैसे घरों में ग्रेवी बनाते हैं उसी हिसाब से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन प्लस उसके बाद मसाले, जीरा, काली मिर्च, देगी मिर्च, किचन किंग, कसूरी मेथी, वो सब डाल के कंप्लीट सब्जी तड़का तैयार किया जाता है. This is followed by baskets of potatoes, peas, and large ladles of tomato puree. एक कढ़ाई में हम 200 किलो आलू और 60 किलो मटर डालते हैं, जो कि क्वांटिटी इसकी भी 300-400 किलो कंप्लीट बनती है बनने में. When the dish is ready, chefs tip the pot and scrape everything out. Another curry dish the kitchen serves for the holiday feast is kadi chawal, which is made with a base of cumin, masala, and dried fenugreek leaves. When the base is mixed, chefs add gram flour and hung curd. इसके अंदर हमारा 15 से 20 किलो बेसन लगता है और 30 से 40 किलो मतलब कि दही लगता है. While the kadi mixes, chefs prepare the final part of the dish on the side. They mix spinach, onions, flour, and spices in a large pot to make pakodas or fritters. When they achieve the right consistency, the mix is then tossed into a wok and fried quickly. These fritters are then added into the curry. ये मतलब ये भी 300-400 किलो इसमें कंप्लीट कड़ी बनती है. Next up, the kitchen is making aloo gobi,
a simple vegetarian dish made with potatoes and cauliflower. It starts with a tadka base of cumin, turmeric and chili powder. Then the chefs add in baskets of cauliflower and potatoes. They mix everything together to evenly coat the veggies and continue stirring until they are finished cooking. An everyday staple on the langar's menu is fresh dal, or split lentils. Green, yellow and brown lentils are all washed by hand daily and added into a pot full of water. The lentils are then seasoned with salt, chili powder and turmeric and covered. 5 कुकर है हमारे पास, एक के अंदर 60 से 70 किलो कच्ची दाल बनती है। ये सारा ऑटोमेटिक है। जब दाल कंप्लीट हो जाती है ये बजर बजने लग चालू हो जाता है कि दाल कंप्लीट हो गई है। इसमें भी बहुत टाइमिंग कम लगती है, जैसे दाल को 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसमें आधे से पौना घंटा लगता है। इतनी जल्दी बनती है और इतनी टाइमिंग कम लगती है ना कि जितनी संगत आ जाए, लाखों के हिसाब से संगत आती है, कभी लंगर की कभी कमी नहीं हुई। जिसको कंप्लीट बनने के बाद दाल 350-400 किलो होती है। Across the kitchen, flatbreads are made using machines. उसके बाद ये हमारी मशीन रोटी मेकर जो 1 घंटे में 2000 प्रसादें बनाती है और कंप्लीट ऑटोमेटिक है। सब कुछ इसमें पेड़े, आटा, सब ओनली आटा गूंदना पड़ता है हमारे को। गूंद के इसके अंदर डालेंगे, कटिंग, पेड़ा सब इसी ने करना है। उसके बाद ये देखो, ये रोटी कंप्लीट होके अप डाउन 3 राउंड में बाहर रहती है। While these machines make a majority of the bread the langar uses, there is another area of the kitchen dedicated to making these breads by hand. This is done so people can practice sewa, or self-love service, a tenet of Sikhism. जो संगत आती है, जिनकी श्रद्धा होती है कि हमने भी गुरुद्वारा बंगला साहब में सेवा करनी है, तो वो यहाँ पे आके मैनुअल सेवा कर सकता है। 24 घंटे चलती है, जब भी किसी की श्रद्धा हो कर सकते हैं। The langar officially opens its doors at 5 a.m. to serve food. तो आप देखोगे गुरुपुरब का दिन है, आज गुरुपुरब चल रहा है और ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है। इसी तरह आज गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी मनाया जा रहा है, तो लाखों में लोग आएंगे। Because of the kitchen's popularity, it's not uncommon for people to wait 2.5 hours outside to get a free meal. Inside the dining hall, visitors take their seats side by side in long rows known as pangats. This style of seating is an important part of the temple's philosophy of promoting equality and ending discrimination. तो जहाँ पे राजा भी आए उसको भी उतना ही समानता दी जाती है और एक भिखारी को भी उतनी समानता दी जाती है। Once everyone is seated, volunteers, known as sivadars, lead a religious chant in honor of the Guru. Then the servers come around spooning large portions of food into metal plates. And while the amount of food one can eat is unlimited, there is a rule that not a single bite of food can be wasted, so plates must be cleaned before finishing the meal. लंगर की खासियत तो यही है कि वो लंगर है, प्रसाद है, उसको आप एज ए मील नहीं ले सकते, ये गुरु का प्रसाद होता है और इसमें हर पार्ट ये बेस्ट है, कोई भी इसमें कोई कमी ना होती है ना होनी चाहिए और ये बेस्ट है, अपने में हर चीज़ अच्छी है। When a batch of guests has finished eating, workers sweep and wash the floors before another group is allowed to enter. और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि साफ़ सुथरा रहे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सबको साफ़ सुथरा, हाइजीनिक और गर्म लंगर तैयार करके दिया जाए। मैं बंगला साहब काफ़ी बचपन से आ रहा हूँ, लगभग 20-24 साल हो गए जितनी मेरी एज है। खाना साफ़ सुथरा था और काफ़ी आज क्या था कि नॉर्मली क्या होता है कि दाल चावल रोटी मिलती है नॉर्मली
देखा जाए तो नॉर्मली डेज़ पे। बट आज क्या, जैसे बैसाखी होती है, आज 31 भी है, तो आज गुरु की कृपा से हमें पनीर भी मिला, खीर भी मिली। और ये देखो कि ऐसा नहीं है कि स्पेशली कुक है कि एक ही बंदा आके बना रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म का बंदा आके कोई भी सेवा कर सकता है, उसकी मन में सेवा भावना होनी चाहिए। और सेवा से क्या होता है कि दिल में एक भावना जागती है उस अकाल पुरख के लिए, फिर हम उसके आगे फिर हमारा अंदर से बनता है।